बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद नाज़रीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन अख्तर और बर्मिंघम पब्लिक हेल्थ की तरफ से पेश कर रही हूँ आपके लिए हेल्थ मैटर्स का प्रोग्राम। जैसे कि आपको पता है, एवरी वीक हम लेके आते हैं एक नई टॉपिक हेल्थ के बारे में डिस्कस करने के लिए। और आज की हमारी टॉपिक है, पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे फ्लू वैक्सीनेशन। जैसे कि आपको पता है, गर्मी का मौसम खत्म हो गया है और सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और सर्दियों में आम फ्लू वैक्सीनेशन के बारे में बात की जाती है। बहुत से लोगों को कोल्ड या फ्लू हो जाती है। सेकंड हिस्से ऑफ द प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट और सर्वाइकल स्क्रीनिंग। चलते हैं अपने स्टूडियो गेस्ट की तरफ और इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं Nicola Bench, Public Health Consultant. Welcome to the Health Matters Programme. Thank you. And Nina Veena Gopal, Immunisation and Vaccination Coordinator, are you? That's right, Nazreen, thank you. Welcome to the Health Matters Programme. Okay, Nicola, today we're here to discuss a very important issue around seasonal flu vaccination and the flu. Winter months are coming upon us. Can you tell me the difference between the a common cold and a flu? Because a lot of people mistakenly mistake the flu for just a common cold. Yes, in fact, yes, they do, and they are very different things actually. In terms of the cold, you get a runny nose and a bit of a headache, and you feel down and hot and bothered and not well and generally under the weather. But it normally lasts only 2 to 3 days, and if you have a bit of a rest and take some paracetamol, you're fine. Flu's completely different and much more severe, and we do get the two things mixed up, and we talk as if they're the same thing. But flu is a serious illness that most of us only have a few times in our life, and it really does knock us off in terms of our health. And the differences are, you still have the cold and the runny nose and feeling unwell and the shivers, but you get much more significant joint pain and headache and a much higher temperature. And most people find that they actually can't possibly get out of bed. They are so poorly with it, and it lasts up to between 7 and 10 days. So much more severe, much higher temperatures, aches, vomiting sometimes and diarrhea sometimes, but much more severe than the cold is. निकले ने हमें बताया डिफरेंस कोल्ड और फ्लू के बारे में। जैसे कि बहुत से हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे होंगे वो तकरीबन यही सोचेंगे कि हर साल उनको फ्लू ही हुआ है, लेकिन जैसे निकले ने बताया ये गलत है। हाँ, क्योंकि आम फ्लू जो है उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 हफ्ता में चला जाता है, लेकिन जो फ्लू है बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं लोग, इतना कमज़ोर कर देते हैं बदन को, गुस्नी सब में काफ़ी दर्द होने लगता है। तो ये सब फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ताकि आपको जैसे काम हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे व्यूअर्स को ये बताने का है कि जो कोल्ड होती है वो शायद 2-3 दिनों में चली जाए, और जो फ्लू, अगर आप फ्लू के शिकार हो गए हैं तो मे बी ये सिर्फ आपको 2 or 3 टाइम्स आपको पूरी लाइफ में होता है, 2 या 3 बार होता है। लेकिन अक्सर लोग ये कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें फ्लू है, लेकिन उनको शायद कोल्ड हो जो 2-3 दिनों में चली जाए। और आप बता सकते हैं ये कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है? क्या है कि अगर जैसे फ्लू आपको हुआ है तो कभी कभी गर्मी लगता है, कभी ठंड लगती है, और ये जो कभी कभी उल्टी होती है, डायरिया भी हो जाता है, और ये सब चीज़ बदन को बहुत ही कमज़ोर कर देगी। या कभी कभी इतना जैसे अगर कोई बीमारी है तो और इतना कर देगी अस्पताल जाना पड़ता है, और कभी अगर अस्पताल जाए तो ये लोग मर भी जाते हैं इससे। Okay, Nicola, flu sounds very serious. What is the worst outcome of possibly having the flu? Flu is very serious, and particularly for those people who are older and for those who've got conditions such as diabetes or heart disease or breathing problems. And because of the virus can make systems so unwell, the outcome is that every year a number of people die from flu,
And actually those are people, as I said, in vulnerable communities in terms of their diabetes and their heart disease, but also pregnant women. And we forget that actually in terms of pregnant women and flu, that if you get flu when you're pregnant, actually it can kill both the mother and the baby. So very serious conditions that we underestimate because we get them mixed up between cold and flu. And in terms of if you are from those risk categories in terms of being elderly over 65 or you're expecting, are you more likely to suffer from the flu? You're not, well, some groups are more likely to catch the flu. So if the older people, because your immune system is not so good, you're more likely to get it. And the same with pregnancy, your immune system is put under pressure. So you are more likely to get flu if it's circulating. But actually when it's circulating, the chances of everyone getting it are higher. So even if you're not more susceptible to it, the fact that you are in a community where flu is circulating, you get it, the outcomes are likely to be more poorer for those people. So as I said, each year a number of people die from flu. Nina, Nicholas mentioned those at-risk groups. क्या advice है जो हम अपने viewers को दे सकते हैं if they're in that at-risk group? अगर जैसे निकला बता रही थी, जैसे चीनी का बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, सांस लेने में दिक्कत हो, आस्थमा हो, और कोई हार्ट कंडीशंस है, नहीं तो किडनी या लिवर डिजीज़, ये सब है ना कि अगर आप को फ्लू हो गया तो बीमारी और ख़राब कर सकती है. तो इन्विटेशन मिलता है कि आप जाकर के फ्लू का इंजेक्शन ले लीजिए, सीधे जीपी से आता है, आप जाकर के वहाँ पर टीका लगवा लीजिए और ऐसा समय में लगवा लीजिए जितना जल्दी सीजन में हो उतना ही बेहतर, क्योंकि जब आपका तबीयत ठीक है और सर्दी का सीज़न शुरू नहीं हुआ है तो उस समय ले लीजिएगा तो पूरा सीज़न तक आपका देखभाल रक्षा होगा, कवर हो जाएगा. हाँ. Nicola, Nina's mentioned an invitation that the GP may send out with regards to the flu vaccination. Can you tell us a bit more about it? And if somebody's already had the flu vaccination last year, is there any need for them to go and have it again? Yes, you should get an invite each year, so if you're over 65 or in any of those at-risk groups that we've talked about, and the doctor or GP will contact you and send you a letter or ring you up and ask you to come in. The reason that you have to have the vaccine every year is because each year the strain of the flu varies, so it's a different type. And so each year it's made up of the viruses, because it's a virus that's circulating within our community, so we know what they are. But they don't give lifelong protection, so every year everybody who is at risk or needs the flu vaccination or is asked to come and have another vaccine. So you do need it every single year. So it's not a case like with some of the other injections, if you've had it, you don't need to go back for another 5 years or 3 years or whatever it may be. It's important that every year somebody gets it. Yes, that's absolutely right. It's every year. And as I said, sometimes what's in the flu vaccine varies depending on what's circulating in the community in terms of the viruses. Nina, आप बता सकते हैं ये flu vaccination यानी कि flu का टीका किस तरह work होता है? क्या है कि वायरस को कमज़ोर करके टीका में डाला जाता है, उसको बदन के अंदर इंजेक्शन करके बदन अपना चीज़ एंटीबॉडीज़ उसको बोलते हैं जो बनाता है, उससे 5 या 10 दिन के अंदर में वो एंटीबॉडीज़ बना करके वो जान जाता है कि क्या चीज़ है. तो जब फ्लू आता है उन लोग को बदन में तो बदन जान जाता है कि क्या एंटीबॉडीज निकालना है और तुरंत रक्षा करने लगता है. इसीलिए बहुत ऐसे ही अपना बदन का इंजेक्शन आपको मदद करता है. So एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है that for the flu vaccination, फ्लू के टीके के लिए आपको नवंबर दिसंबर तक वेट नहीं करना चाहिए कि that is too late then, क्योंकि अगर 5 या 10 दिन लग जाते हैं उसको काम करने के लिए, so if you're in November or December, am I right in saying you're already too late? करना जरूरी है, जितना जल्दी कर सके कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन जितना पहले आप करिएगा उतना नहीं. और क्या है कि अगर फ्लू इंजेक्शन ऐसा समय में लेना चाहिए कि आपका तबीयत ठीक हो,
तो अगर कुछ होने से पहले लिए तो वही बेहतर होगा। ओके, सो अगर आपको जैसे कि फ्लू ऑलरेडी हो चुका है या आपको कोल्ड है तो फिर टीका लगाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके जब उसका सिम्टम्स खत्म हो जाएगा तब जाकर के आप फ्लू का इंजेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि क्या ना कि फ्लू एक तरह का नहीं है, दूसरा तरह का है। तो एक फ्लू का अगर है तो हो सकता है कोई और दूसरा वाला आपको लगेगा, क्योंकि ये टीका में तीन को दूसरा तरह का वायरस का प्रोटेक्शन मिलता है। Nicola, Nina's mentioned how important it is to have the flu vaccination in a timely manner. A lot of our viewers will be thinking, is the flu vaccination dangerous? Because sometimes people think that it is dangerous and the vaccination can actually cause the flu. The vaccination can't cause flu. The worst that it can do is give a localised reaction, so you get a little red lump where it is. But you know, we hear lots of times people say you get the flu from the vaccine. You don't. It's just coincidence that you end up getting a cold or a runny nose at the same time. But no, the vaccine cannot give you flu. It will protect you against flu. And sometimes in the community I have heard that, you know, if you go for an injection, you may get a temperature, you know, the first 2 or 3 days you'll become unwell, and that tends to put people off. Is that all just a myth? Yes, that's all just a myth. नीना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो निकला ने बताया है कि फ्लू के टीके से फ्लू नहीं होता। नहीं, क्योंकि जो अंदर जा रहा है वो वायरस को कमजोर करके रखा जा रहा है, कोई लाइव वाला नहीं है, तो इसीलिए फ्लू नहीं दे सकता है। लेकिन आम सिम्टम्स होता है जो किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, इसलिए उससे आपको फ्लू नहीं मिलेगा। Nicola, some of our viewers will be expectant mothers. And you've already mentioned that if you are expecting, you may be at risk of the flu, and it is recommended for you to have the flu vaccination. Will this harm their unborn babies? No, it won't. It'll actually give some protection, because as you know, some things pass across the placenta. So actually, when the mother has the vaccine, it also gives the baby a bit of protection too. So it is really important, and I think we're so cautious about taking things or doing things when we're pregnant, but this is something that we can really positively do for ourselves and the baby. And it's the same as the new pertussis vaccination as well, which can be given at the same time. It helps to protect both mum and baby, so really important, and it won't do any harm. And speaking about at-risk groups, one of the at-risk groups, is it children as well? Yes. And I think for the very first time in Birmingham secondary schools, are they being vaccinated? Could you tell us a bit about that programme? Yes. I mean, we've always vaccinated children who are at risk, who've got heart disease and diabetes and those kind of conditions. But from this year, we're going to start to vaccinate healthy children in schools, year groups 7 and 8, that's 11 and 12-year-olds in secondary school. And each child across the city and across the West Midlands is going to be offered the nasal fluenza vaccine, which is for healthy children. And the reason for giving that is because children often spread flu. We know they go to school, they come back. Oh, I know that. Yes, exactly. And before you know, everybody's got it. Exactly, and it spreads really quickly around, especially if you've got families all together at any one time. So this year, as I said, it's a new programme. It's new to the UK, or been used in the US for a long time. Is we're going to offer the vaccine to school-aged children. And basically, I've got some here, but it's instead of giving an injection into the top of the arm, what you do is you spray a little bit of the vaccine up each nostril. Oh, so it's not an injection? So it's not an injection, although it looks like a syringe, it's not an injection. And literally, as I said, it's just sprayed up each nostril very quickly, very harmlessly, and gives really, really good protection against flu. So you've got your child that's protected. And then also what this does is it stops spread in the community. So we think that actually by vaccinating these young children, they'll stop it being in the community so much so that it'll stop spread. Can we ask Nina to hold that up for us? So this is the actual spray that, can we hold it upright, Nina? Yeah. So this is the actual spray that would be used. Is it one in each nostril for the children? It's just that and it's squirted up in equal doses, tiny little bit of liquid up each nostril.
and you can see there's no needle or anything sharp on the end. It's just goes gently into each nostril. Okay. So जैसे कि हम flu vaccination की बात कर रहे हैं, flu के टीके की, it doesn't always mean that it's an actual injection. ये दूसरे तरीके का. So maybe sometimes people are fearful, or children are fearful of the injection. This is a way that they don't use. ये बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि कोई दर्द उर्द नहीं होता है, खाली नाक में और काफ़ी बच्चे के लिए अच्छा है कि जल्दी से हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. Nicola, how will parents know about this injection, well, this nasal spray that's being administered to children? Will they get a letter through the GP? Will it come via the school? Could you tell us a bit about that? Yes, hopefully the letters have started to come out through the schools, and you'll be sent a letter, normally in the school bag, isn't it, and then sent back to the school consenting or not to the flu vaccine. And the programme will start at the beginning of October, so in terms of it being offered in schools between October and Christmas break, so between the middle of December, and it'll be, as I said, offered to all children in those 2 year groups. In those 2 year groups. Yes. Now, there'll be some viewers that are listening and may want their children protected against it, and they may be thinking, so how do they go about getting their child vaccinated? This year, because it's just a pilot, we are only offering it to years 7 and 8 in schools, and then 2, 3 and 4 year olds, so young babies in GP practices. That's the only people we can offer it to this year, unfortunately. But we do urge those who are in those age groups to take it up. And the trial isn't about actually, is this a safe vaccine or not? This is about actually, how do we get it to so many people? Because across our patch it's going to be about 30,000 children that we'll be offering this to in schools. So we want to know how to do that and what's the quickest way of doing it and the most effective. Of course. नीना, निखिला ने हमें बताया कि ये जो फ्लू वैक्सीनेशन है जो बच्चों को दे रहे हैं ये 7 और 8 Birmingham secondary schools में, निखिला mentioned that it will also protect the families. आप बता सकते हैं कि how will it protect the families? क्या नहीं कि बच्चों हम लोग के आते जाते हैं स्कूल से बाहर से और फ्लू लेकर के आते हैं. पिकअप कर लेते हैं. हाँ, तो जैसे आप अपने परिवार में बुजुर्गों को सबको फ्लू दे सकते हैं. तो जितना हम लोग बच्चों में फ्लू को कम करें उतना ही जल्दी उसका जो स्प्रेड है वो कम कर सकते हैं. इसीलिए Nicola, we've spoken about the vaccination and we want to prevent people from getting ill in the first place or getting a cold or getting a flu, and prevention is better. So in terms of the vaccination, it's all about prevention. However, some people unfortunately will go on to get the flu. Can you tell us a bit about what they should do in that scenario? Yes, if you think you've got flu, the most important thing is to stay at home. Now, for some, and particularly if you've got other conditions, you need to speak to your doctor and just check out in terms of the symptoms and how you're feeling. So rather than going down to the surgery or to the hospital, ring your doctor and say how you're feeling and ask them what the best thing to do is. Now, it may be that if you're in one of those risk groups, you do have to go to your GPs, but it's better to either go at the beginning of the surgery or the end of the surgery, because we've talked about flu is very infectious. So if you go in to a surgery, your GPs, then that'll spread. So give the doctors a ring first, take paracetamol, plenty of water and rest. Those are really important things. But if you're in that at-risk group, make sure you ring your doctor and tell them how you're feeling, and they can decide whether you need any other treatment. Nina, Nicola's giving us a very important point here. हमारे कुछ viewers ये सोच रहे होंगे कि उधर हम ये बता रहे हैं कि flu is very contagious और infection आपको लेनी चाहिए और या अपने बच्चों को nasal spray से protect करना चाहिए. दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको flu हो गया, don't go to your GP, उनको फोन करके advice उनसे ले लें. थोड़ा और आप इसके बारे में बता सकती हैं कि क्यों उनको जीपी में नहीं जाना चाहिए? क्या नहीं कि जैसे निखिला बता रही थी कि ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो जल्दी स्प्रेड हो जाता है. अगर आप सर्जरी में जाएंगे जहाँ लोग का तबीयत ख़राब है तो उन लोग को देंगे तो उन लोग को भी फ्लू हो जाएगा. और क्या नहीं कि जो फ्लू है बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है, तो उसका मतलब कि एंटीबायोटिक्स कोई उस पर कोई काम नहीं पड़ता है. तो इसलिए डॉक्टर्स के यहाँ जाने से
कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा और दूसरों को खतरा में आप रखेंगे इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज समटाइम्स हमारी कम्युनिटीज में लोग ये समझते हैं that अगर फ्लू हुआ इट्स इम्पोर्टेंट टू गो टू द डॉक्टर्स और वहाँ से आपको एंटीबायोटिक्स या किसी तरीके की दवाई लेनी चाहिए बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस क्योंकि अगर आप घर में बेड रेस्ट और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और पानी पी के और जैसे कि निकले ने बताया पैरासीटामोल माइल्ड पेन के लिए लेके तो आप खुद वो सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं सेल्फ केयर कर सकते हैं और वैसे भी इंटरनेट पे बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जैसे कि NHS चॉइसेस जो आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे सकते हैं Nicola, in terms of the flu, is there anything that people can do generally to try and contain it, to stop it spreading? So if one member of the family has got flu, how can people stop it spreading? If somebody in the family's got flu, it's good that they have some bed rest, that they aren't, you're not having visitors coming round if there's flu in the house, and that simple things like using a tissue and disposing of the tissue and washing your hands. We talk about it lots, but washing hands is really important because if you've got a cold or you've got flu, the first thing you do is put your hand to your mouth and sneeze, and that's how we spread flu actually, not from aerosol but actually from hand-to-hand contact. So wash your hands. Of door handles after, yes, exactly, and yes, that's how it's much more likely to spread. मीना ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका फ्लू हो गया तो वो किस तरह कंटेन कर सकते हैं निकला ने ये बताया कि आप टिश्यू यूज करें और टिश्यू को फौरन बिन में डाल दें और कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को तो आप अगर जैसे छींके या खौफ कर रहे हैं तो अपना टिश्यू में लेकर के फेंकिए हाथ धोइए हाथ धोना बहुत जरूरी है और जैसे अगर कुछ यूज कर रहे हैं जिससे कुछ खा रहे हैं जिससे पानी पी रहे हैं ये सब चीज दूसरों नहीं यूज करें क्योंकि वो सब मुंह से उसका हो सकता है कि दूसरों को दे दे तो अपना सामान जैसे अपने ही पास रख के दूसरे के साथ शेयर नहीं करें Nicola, hopefully you will have convinced a lot of our viewers to take up the flu vaccination. Can you tell us a bit about what your recommendations are, when they should take it up? As soon as possible now, as we get into October, the vaccine will be available and your doctor will be writing to you. If you haven't had a letter from your doctor, do go along or contact them and say, you think you're due the flu vaccine, can you have it? And then, flu happens at different times of the year, so it's never too late. Even if you haven't had it at Christmas, then have it later in the year. But go and get your vaccine. Encourage your children to have the vaccine and take them for their appointments, etc., if they need to, and consent. So anyone who thinks they're in the at-risk group or wants the vaccine, do speak to their doctor. Okay. Nina, is the only place that they can get the vaccine at the doctors, or जैसे कि मैंने सुना है कुछ pharmacies वगैरह में भी पोस्टर लगे हुए होते हैं कि you can get your flu vaccination from the pharmacy. Maybe if अगर doctor busy हो, patients cannot get through to the doctor, ये एक option है कि नहीं? हाँ है. पहली जगह हम लोग बोले कि GP के यहाँ जाइए और वहीं पे आप फ्लू लीजिए, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं फार्मेसी में बहुत तरह के फार्मेसी में जा करके आप इंजेक्शन्स ले सकते हैं. नया स्कीम शुरू हुआ है जो फार्मेसीज के आपको फ्री में दे सकते हैं, लेकिन अगर ये जो एट रिस्क ग्रुप को बता रहे थे या ओवर 65 के हैं तब फ्री में है, लेकिन और दूसरों के लिए हो सकता है आपको पे करना करेगा. Okay, so the flu vaccination isn't free for everybody. No, only those who are at risk or somebody who's caring for somebody. But it is free to a large percentage of the population. About 50% of people will be covered this year with the flu vaccine. But yes, if you're healthy and you're under 65, you're not and not a child, then you're generally not eligible for the vaccine. And Nicola, is there any websites, Nina and Nicola, is there any websites that you'd like to tell our viewers about that they can get further information on? NHS Choices is the best website to go on. It has all the most up-to-date information and is very easy to use. And then Nina, you have something there for us? Yeah, this is the leaflets that's on here, and on the back of it, it gives you all the details
the advice line as well as the websites on there. But if you go onto the website, this is Yes, the you actual. hold it up. Thank you. That's the. तो इस ये NHS choices में फिर आपको फ्लू वैक्सीनेशन के बारे में पता चल सकता है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2014 से 2015, ये इस वजह से है क्योंकि इस साल का है, इस साल का है और इंफॉर्मेशन और गाइडेंस चेंज होता रहता है सालों साल. डू यू अपडेट इट? हाँ, ये हमेशा नया निकलते रहता है हर साल के लिए, और इसमें बहुत तरह का न्यूज़ है जो हम लोग अभी जो बात कर रहे थे, ये सब चीज़ है उसमें. और अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसमें जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर कुछ भी हो, अगर वरी करें तो अपना जीपी के पास चले जाइए. And Nina, is this information available in any other languages? उर्दू में या पंजाबी में जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उनको मिल सकता है? हाँ, अगर वेबसाइट में जाइएगा तो हर तरह का लैंग्वेज में है. आई थिंक 14 से ऊपर लैंग्वेजेस होंगे. और एक चीज़ और है, उस पर सीडी है जिसमें कोई वीडियो देख सकते हैं जो बता रहे हैं. Okay, so अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो they can view the video. वहाँ वीडियो क्लिक करके उस पर सुन सकते कि क्या जरूरी है. उसमें इंफॉर्मेशन सब है उसमें, तो 3 जगह पर जैसा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको. Fantastic. We're nearly due to finish our first half of our program. Nicola, is there any final messages around the flu vaccination that you want to leave with our viewers? Yes, I think the key thing is to get vaccinated, to encourage your children to have the vaccination if they're in the right years. It's really important, and it will stop people being so poorly with flu. So encourage everybody to take the flu vaccine. Nina, आप कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे नाज़रीन को देना चाहते हैं फ्लू के बारे में? हाँ, हम बोले कि जैसे ही आपको जीपी की तरफ से इन्विटेशन मिलेगा तो आप जा कर के, जब आपका तबीयत ठीक है और सीजन का शुरुआत है, तो अभी जा कर के फ्लू का टीका लगवा लीजिए और अपना सेहत का ख्याल रखिए. नाज़रीन, ये थे हमारे गेस्ट हेल्थ मैटर्स के प्रोग्राम पर निखिला बेंच और नीना वीनू गोपाल, जो हमें फ्लू वैक्सीनेशन के बारे में बता रहे थे. अभी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो चुका है. प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में मिलते हैं, वहां पर हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग और सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में. थैंक यू.